has been a frontline state against terrorism, or a shield or a wall between the terrorists and the rest of the world. When one Pakistani lays down his or her life, it is for the motherland, yes. But then laying down that life makes the world a safer place. No other country has, to its credit, 90,000 lives laid down. Hundreds of billions of dollars of economic losses suffered. So, how can a country which is countering terrorism be blamed for terrorism? And who is pinning this blame on Pakistan? A country which is responsible for the assassination of Sikhs across the globe? A country which is responsible for the assassination of Hardeep Singh Najjar in Canada? There are allegations of assassinations in US, UK, Canada, the world over. Transnational regression, transnational assassinations are taking place. So my question was, when I addressed the international media, that one country is combating terrorism and the other country is promoting terrorism, and I do not say this on mere conjecture. I have substantial evidence to back my arguments. Wasn't Kulbhushan Yadav captured in Pakistan? Wasn't he involved in terrorist activities? So when an Indian spy is captured red-handed within the territory of Pakistan, and he is detained, and it is proven at the international level that he was in fact involved in these activities, then which country is promoting terrorism? So our task with regard to the narrative domain was telling the truth to the world in an effective manner, and we did that at the right time, at the right forum. On the other hand, the Indian media and the Indian government made claims during this May war which were absolutely absurd. And I must also commend the role of the Pakistani media, the Pakistani academia, the Pakistani intelligentsia. Our media channels, our social media, our analysts, our anchor persons, our reporters made us look very good at the global stage, because at one hand you had the Indian media indulging in war hysteria, in war mongering, and we had this theater of sorts going on in which they had destroyed the port of Lahore, which is a landlocked city, the port of Multan, which is also a landlocked city. So we saw these absurd claims being made, and we saw that Pakistani media was giving out information which was 100% authentic, which was verified, and which could not be contradicted at any level. And what was the reason? Because there was complete unanimity. There was a smooth flow of information, uninterrupted flow of information between the state institutions and the private sector media. And I was thinking that we grew up with a certain sense of patriotism. What about the Gen Z? How would they respond in this situation? But I tell you that our younger generation has made us so proud that when during this heat of war, they started their own meme war. Now the whole world was wondering that you have missiles and bombs flying around, and you have the Pakistani youngsters sitting on their keyboards and their smartphones making these memes. And the enemy was wondering that war is a serious business. What is Pakistan doing to us? And Alhamdulillah, we were at the top of our game. So when it came down to the narrative game, when it came down to the actual war, the conventional war, when it came down to diplomatic efforts, our foreign office, our foreign ministry, all state institutions, because we had a lot of truth to tell to the world, and we told it the right way. So I think we were, alhamdulillah, at the top of our game. On the other hand, the enemy, they kept making mistake after mistake. And the whole world saw that how their nefarious designs were exposed. And as I said, the civil military leadership being on one page and being united, and that was true for every level.
So that unity really helped us tell the world what we meant. And I must pay tribute to Field Marshal Saeed Asim Munir and his bold and courageous leadership. And the way Pakistan responded, it lifted the spirit of the entire nation. And we, Pakistan as a responsible nation, responded with regard to military targets, with regard to military bases. As opposed to India, they had attacked our civilians. Our valiant Air Force, when those 8 planes went down, and a lot of them were Rafale planes, which are a source of pride for India, those planes brought down with them the Indian arrogance and proved to the world, once again, our dominance in aerial battle and how Pakistan's indigenous technology helped Pakistan achieve victory. And our Navy was alert and ready to respond to any aggression. So this Marka-e-Haq belongs to the entire nation. We saw the entire nation stand tall, stand united. And we set aside our political differences. We set aside our difference of opinion. And the whole nation came together as a united force. So I think in my domain, the narrative domain, my work was very easy because we were telling hard facts and we were telling the truth to the world. I remember when the first missiles came in Bahawalpur and Murid Ke, we have a digital communication department, a state-of-the-art department which we've established. So it took me 20 minutes to get there and just man the seat and address the international media and tell them what was going on. So Pakistan was not only well within its right, but I think we had a lot of support from the people of Pakistan, because the people of Pakistan were standing behind their armed forces, behind the government. And the whole world saw that starting from the false flag operation of Pahalgam and the baseless allegations made against Pakistan, Pakistan played all its cards right. And you've seen the aftermath of Marka-e-Haq. The nation till today stands united, and you've seen the kind of respect and dignity that Pakistan has earned in this 1 year after the success of Marka-e-Haq. Pakistan's relevance, significance at the international level. Pakistan's name is taken with a lot of respect. People see it as a serious country which is resolving international disputes. Our leadership is widely respected. The world realizes Pakistan's potential, Pakistan's talent. And on the other hand, you had your eastern neighbor, which spent hundreds of billions of dollars through lobbying firms, through PR firms, to come up with its shining slogan. But from shining to isolation, this is a 1-year journey. When you base your entire premise and narrative on false information and propaganda, and you externalize your internal issues and internalize your external issues, and you try to create hegemony within the region, and you assume the role of a bully of South Asia, that can never go well for you. And within this 1 year, as I said, from shining to complete isolation, we've all witnessed this great journey, how Pakistan has transformed after Marka-e-Haq. It's a moment to be proud, and it's a moment to bow our heads before Almighty in humility, with the hope that Pakistan continues to prosper and the people of Pakistan continue to feel proud in this great nation of ours. Thank you very much, Pakistan Zindabad.
इन्फॉर्मेशन अता तारर का मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब आपने बराह रास्त मुलाज़ा फरमाया। वज़ीर कहते हैं कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई ज़िम्मेदाराना था, जबकि जंग के दौरान भारतीय मीडिया का किरदार इंतहाई मुज़ाहका खेज़ रहा। उन्होंने कहा कि मार्का हक के दौरान सोशल मीडिया को नौजवानों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। वज़ीर ने कहा कि जंग में साबित हो गया कि पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार किए गए हरबी आलात जो हैं वो इंतहाई पायदार और ज़बरदस्त हैं। ड्रग डीलर कोकीन क्वीन पिंकी को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया, वीडियो सामने आ गई। ड्रग डीलर कोकीन क्वीन को कैसे और कहां से पकड़ा गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, वीडियो सामने आ गई है। मंशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी को हिरासत में ले जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनमोल उर्फ पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते दिखाया जा सकता है। देखा जा सकता है फ्लैट का दरवाज़ा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी खुद ही थी। लेडी सर्चर समेत पुलिस एहलकारों को फ्लैट में दाखिल होते देखा जा सकता है। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के वक्त घर से मंशियात और असलहा बरामद हुआ। आप बराह रास्त देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो। ड्रग डीलर पिंकी को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया, वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आप देख सकते हैं पुलिस टीम है जो कि पिंकी के फ्लैट के ऊपर पहुंची और यहाँ पे आके लेडी पुलिस भी साथ उनके है। ये इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया, जिससे दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा खोलने वाली ये अनमोल उर्फ पिंकी खुद है और पिंक कलर की इसने शर्ट पहन रखी है और इसके जैसे दरवाज़ा खोला है, लेडीज़ पुलिस जो है वो अंदर दाखिल हो गई और जाके अंदर उन्होंने पूरे घर की फ्लैट की तलाशी ली और इस तलाशी के दौरान घर से मंशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। ये एक फ्लैट है जहां से पिंकी को गिरफ्तार किया गया था। ये आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोलने वाली पिंकी खुद थी। मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची से अब्दुल कादिर मंगरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, आखिरकार वो वीडियो सामने आ गई है जिसमें पिंकी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे लगता है बड़ी मैनेज वीडियो, ये बाकायदा पहले से बनी है, वायरल हुई है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने खुद बना के कुछ इस तरह से इसको वायरल किया, कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? अपडेट कीजिएगा। मैं जी बिल्कुल, जो ये केस है पिंकी और अनमोल और पिंकी का, इस पर जो वीडियो सामने आई है जिस पर जो है पुलिस अंदर जो है दाखिल हो रही है और बाकायदे और पिंकी खुद इसको दरवाजे को खोल रही है, तो जो लेडीज पुलिस अफसर है वो अंदर दाखिल भी हो रही है और जहाँ पर जो है घर में तलाशी भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इसमें जो है भारी असला और मंशियात जो है वो बरामद हुई है और पुलिस की तरफ से इस वीडियो को सामने लाया गया है। और जब ये खबरें चली पहले तो ये सुना था कि पिंकी को जो है वो लाहौर पुलिस से जो है वो हवाले किया गया है सिंध पुलिस को, लेकिन अब ये खबरें सामने आई कि पुलिस को की जानिब से खुद जो है वो पिंकी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की जानिब से जो है फ्लैट पर छापा मारा गया है और पुलिस की जो शर्ट पहनी हुई है वो ही शर्ट है जिसमें गिरफ्तारी जाहिर की गई है। अब गिरफ्तारी बाकायदा पुलिस की जानिब से जाहिर की गई है कि किस तरीके से पिंकी को जो है वो अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया गया। उनकी फ्लैट में जो है पुलिस गई है, 2 लेडीज पुलिस कांस्टेबल साहब थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली है और पुलिस ने जो है